Good morning, everybody. I'm sorry I'm a bit late. So we'll start with today's topic. Can you hear me? Yes, sir. So last time we discussed similarity transformation and some properties of similarity transformation. And in the lecture before that, we were discussing basically, we're taking up a problem of, the problem was like this: given the transfer function, given the state variable model, how to obtain the transfer function. This problem we have already done, isn't it? Yes, sir. So if you have a state variable model like this, x dot equal to ax plus bu and y equal to cx plus du, we have seen that the transfer function corresponding to this can be written as gs equal to ys upon us, with initial conditions assumed to be 0, and that's equal to c si minus a inverse of b plus c. Isn't it? Yes, sir. And when we discussed similarity transformation last time, we also made up this point that many state variable models can have the same transfer function. The condition is that these state variable models, which will have the same transfer function, must be what we call similar models. Similar models means which have been obtained through similarity transformation. The second property हमने देखी थी similarity transformation की, that if you do similarity transformation, the transfer function remains invariant. So that can be summed up in this, that many state variable models, which have to be similar models, that means obtained through similarity transformation, will have, in fact, in that case, they will have same transfer function, because transfer function remains invariant under any similarity transformation. Now, what we are going to discuss today is the converse problem. That's conversion of transfer function model into state variable model. So we'll be discussing converse problem now. And this problem in control system literature, we call it as a realization problem. How do you define a realization problem? Realization problem, if I state it again, given the transfer function obtain its
state variable representation. Given the transfer function, obtain its state variable representation. This is the problem that we are going to take. And this in control system literature, we call it realization problem. Why do we call it like this? I'll just come to it in a while. Now, before I come to this point, why we call it a realization problem, let me first of all just elaborate on this. So if you have been given a transfer function GS, you have to obtain its state variable representation. Now, some points arise in this. You can obtain the state variable representation only for a rational function which is proper. And transfer function by definition is, for physically realizable systems, it has to be a proper transfer function. So proper transfer functions this includes strictly proper transfer functions also. That means, what are proper transfer functions? The degree of numerator polynomial has to be less than or equal to the degree of denominator polynomial can be realized through a state variable model. So only you can have state variable models for transfer functions which are proper. Second is, we can have infinite state variable models, corresponding to a given transfer function. Because we have discussed this, that for a given input-output pair, the transfer function is unique, but we can have infinite state variable representations. So when we say that we have to realize the transfer function through a state variable model, which model we will be interested in? So we cannot have, we will not be going for infinite state variable representations. Are there some special representations that we are interested in? That point I discussed last time, that there are some canonical representations which we are usually interested in while converting a given transfer function into a state variable model. So we are interested only in some canonical realizations of transfer functions. We are interested in only some canonical realization of transfer functions. What does the term canonical mean? Canonical means special. And in what sense they have to be special? Yes? In what sense these realizations have to be special? So maximum term 0 only. Yes? No, it's not like that. Maximum term 0. वो मैंने एक example दी थी last time. So matrices special होनी चाहिए जो उसमें matrices special होनी चाहिए. Canonical realizations basically means matrices characterizing the state variable models must have
special properties. Must have special properties. So that's what we mean by canonical realizations. In this course, we'll be at least taking 3 canonical realizations of transfer function that we'll be discussing in this particular course. What are the various canonical realizations we'll be discussing? I'll just name them here. One is what's known as first companion form realization. या इसको कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं. ये कुछ कैनोनिकल रियलाइजेशंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म. Second realization that we'll be discussing in the class is what's known as second companion form. Or this is also known as observable canonical form. इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा. And third is what's known as Jordan's canonical form. Or which is also known as diagonal form realization. So given a transfer function of an LTI system, we'll be discussing these 3 realizations. That means we'll be obtaining the state variable models in these 3 forms. ये हम discuss करेंगे ये क्या forms है. Before I actually discuss these things in detail, let me first of all talk about this. ये थोड़े points मैं इसमें clear कर दूं आपको. पहला point जो मैं discuss करना चाहूँगा, that is basically what do we call it a realization problem. What's the reason? Why do we call it a realization problem? The reason is that given the transfer function, the definition जो मैंने अभी आपको बताई, given the transfer function of an LTI system, its state variable representation can be realized in the real world either by an analog computer simulation or by a digital computer simulation. What does that actually mean? That actually means that if you have been given a transfer function, let's say g is equal to something, some transfer function, it's a rational function, it's a ratio of 2 polynomials in S, you can actually have a state variable representation which can be, you can actually go to the lab and make a model corresponding to that transfer function by having its state variable representation. And for what do we mean by this analog computer simulation? We'll go into the details of this. In analog computer simulation, the complete state variable model can be realized
through a simple op-amp circuit, through simple op-amp circuits, operational amplifier circuits. I guess you have been taught these op-amps in your fourth sem, is it? Yes, sir. तो ऑपरेशन एम्पलीफायर्स में आपने कौन कौन से सर्किट स्टडी किए हैं, कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन स्टडी की हैं उसकी? आपने एज एन इंटीग्रेटर उसको यूज किया होगा, एज ए डिफरेंशिएटर यूज किया होगा, इज इट? एज ए सिंपल गेन ब्लॉक यूज किया होगा Yes, sir. Yes, sir. सर्किट मोड में। तो वही बेसिक सर्किट्स यूज करके आप अपने सिस्टम को फिजिकली रियलाइज कर सकते हो बाय ऑब्टेनिंग इट्स स्टेट वेरिएबल मॉडल, और यू कैन इवन गो फॉर अ डिजिटल कंप्यूटर सिमुलेशन। दैट मींस इफ a transfer function is given to you and you want to simulate your system by means of a digital computer, the procedure is that you first of all convert your transfer function into a state variable model and then feed that state variable model to a computer program which will actually be giving you the simulation of the system corresponding to different inputs. Is that clear? So that's where this term realize comes from. That's why we call it a realization problem. That is, we can have a physical realization of the systems, of the mathematical models of the systems, either by an analog computer simulation, which we'll be discussing in detail, or by a digital computer simulation, जो कि आपको लैब में अगर हो सके तो थोड़ा बहुत दिखाएंगे हम, और आपका जो कंप्यूटर एडेड सिमुलेशन वाली लैब है उसमें भी थोड़ा बहुत हम ये डिस्कस करेंगे. So this is the reason why we call this problem as a realization problem. And second point that I want to make is reasons for getting space or state variable realizations of transfer functions. Given a transfer function, what is the reason? Why do we want to get its state variable representation? पहला तो ये है कि realizing the given transfer function in a real world, either through op-amp circuits or by means of a digital computer. That's one reason that we already discussed. Second is, बहुत सारे cases में we obtain the transfer function of the system from experimental data. I guess in the last semester, when you discussed Bode plots, you must have been told that Bode plots are basically used in order to get the transfer function of the system from experimental data. कुछ systems ऐसे होते हैं which are in the form of black box. Black box means you don't know the mathematical model of the system. So what do? You actually do some experiments on the system. You give some inputs and see the output. Typically in frequency domain. So input-output relationship से आप इसकी transfer function establish करते हो. Based upon the input-output data, you establish the transfer function of the system. I guess we'll be doing one experiment related to it also in the lab. That means if you have been given a black box system in the form of a black box, how do you obtain its transfer function? So if you have the transfer function of the system obtained through experimental data, now you want to apply some design techniques based on state variable models, state variable controllers you want to apply onto the system. आपके पास transfer function तो available है, state variable model आपके पास system का है नहीं. You have the transfer function of the system obtained from experimental data. Now you want to apply that controller design techniques which are available for state variable models onto this system. So what do? You first of all convert this transfer function into a state variable model and then apply those controller design techniques to the system. Is that clear? So many a times
it is convenient to obtain transfer functions of systems from experimental data. Then we convert those transfer functions into state variable models for applying state variable models for applying controller design algorithms available for state models. तो स्टेट मॉडल्स के लिए जो हमारे पास कंट्रोलर डिजाइन टेक्निक्स हैं, अगर आप उसके थ्रू कंट्रोलर डिजाइन करना चाहते हो, आपके पास सिस्टम का स्टेट वेरिएबल मॉडल अवेलेबल नहीं है पहले, यू जस्ट हैव द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम व्हिच यू हैव ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटल डेटा. So you first of all realize it through a state variable model and then apply those controller design techniques onto this system. This is another reason why we need to solve this problem. One more reason is, for example, you have a system whose transfer function is given gs equal to, let's say, s square plus 2s plus 1 upon s cube plus 3s square plus 3s plus 2. Let us say I have to obtain the transient response of the system to step input. I apply step input to the system and I want to evaluate its transient response. How will you do it? Yes? Anybody? Time response analysis technique आपने study की है ना? Yes, sir. Yes. So how do you obtain the transient response of a system? सर पहले सिग्नल का लाप्लास लेंगे, फिर उसको ट्रांसफर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन एंटी लाप्लास या सॉरी partial fraction expansion, then inverse Laplace and all those things, isn't it? And then you obtain the time response of the system, and from that you see what is the transient response. तो ये जो on paper okay आप कर सकते हो, लेकिन जितना जितना सिस्टम का ऑर्डर बढ़ जाता है उतना ऑन पेपर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है, isn't it? मान लीजिए आपका सिस्टम का ऑर्डर जो है वो 10th ऑर्डर सिस्टम है, इसके डिनोमिनेटर में 10 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, ऐसे सिस्टम का आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑब्टेन करना है. कैन यू डू इट ऑन पेपर? नो सर. So how do you do it? How do you solve such a problem? सर स्टेट स्पेस में ट्रांस इसको ये कन्वर्ट करेंगे, फिर शायद इजी होगा. नहीं, फिर भी इजी नहीं होगा. इसको बेसिकली ऐसे सिस्टम्स को कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व किया जाता है. ओके, यूज अ कंप्यूटर फॉर दैट. इफ यू हैव अ कॉम्प्लिकेटेड बिग प्रॉब्लम, यूज अ कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग इट. लेकिन कंप्यूटर्स में ये जो इनवर्स लैप्लास और लैप्लास की जो एल्गोरिथम्स हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, वो बहुत इजी नहीं है कंप्यूटर के थ्रू इंप्लीमेंट करना. Instead, what is easy to implement is that if you convert this transfer function model into a state variable model, and then you can use simple ODEs, or ordinary differential equation solvers, for solving these systems using a computer and obtaining the transient response. Is that clear? So transfer functions are converted into state variable models for transient response evaluation through a
computer program. क्योंकि आपको पता है कि स्टेट वेरिएबल मॉडल जो है वो टाइम डोमेन मॉडल होता है, तो टाइम डोमेन में अगर आपको सिस्टम को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंप्यूटर्स के थ्रू सॉल्व करना इजी हो जाता है as compared to obtaining this Laplace, inverse Laplace and all these things. Is that clear? Clear to all? So Yes, sir. these are the various reasons why we actually go for this realization problem. Now let me actually come to the problem that we are going to discuss. So as I told you, we'll be talking about some canonical state space realizations. State space realizations. मैंने आपको अभी कहा कि हम एटलीस्ट 3 realizations डिस्कस करेंगे क्लास में. When it's a realization, it should automatically come to your mind that I am basically trying to convert a transfer function into a state variable model. Is that clear? So we take a transfer function GS. Consider a general transfer function GS defined as GS equal to beta naught s to the power m plus beta 1 s to the power m minus 1 plus beta 2 s to the power m minus 2 plus beta m minus 1 s plus beta m upon s to the power n plus alpha 1 s to the power n minus 1 plus alpha 2 s to the power n minus 2 plus so on alpha n minus 1 s plus alpha n, where m is less than or equal to n. This is the general transfer function that I am taking, which I want to realize through some canonical state space realization. What is the number of poles in this system, in this transfer function? N, sir. N. N poles. And what's the number of zeros? M. M zeros. M has to be less than or equal to n, isn't it? So, we'll consider a general case. Consider a general case where m is equal to n. We consider a case where m is equal to n, so that our transfer function becomes like this: GS equal to beta naught s to the power n plus beta 1 s to the power n minus 1 plus beta 2 s to the power n minus 2 plus so on beta n minus 1 s plus beta n upon s to the power n plus alpha 1 s to the power n minus 1 plus alpha 2 s to the power n minus 2 plus so on alpha n minus 1 s plus alpha n. हम एक जनरल केस कंसीडर करेंगे. That means we are taking a strictly proper transfer function. In case the denominator polynomial has lesser degree than the in case the numerator polynomial has lesser degree than the denominator polynomial, in that particular case some terms will be missing. For example, the numerator polynomial has 1 degree less than the denominator polynomial. उस केस में आपका ये वाला term numerator में होगा ही नहीं, isn't it? Are you getting me? Yes, sir. Okay. And one more point that I would like to make is the denominator polynomial is assumed to be a what we call a monic polynomial. The denominator polynomial, that is the characteristic polynomial. For mathematical convenience, it is taken to be a or assumed to be a monic polynomial. Now, what is a monic polynomial?
monic polynomial is one whose leading coefficient is unity, and leading coefficient is the coefficient of the highest degree term in a polynomial. What is the highest degree term in this polynomial? Denominator polynomial. S to the power n. And what is the coefficient of this here? 1. 1. So this polynomial is known as a monic polynomial. Even if it's not a monic polynomial in the original problem, it can be converted into a monic polynomial by dividing both numerator and denominator by this coefficient, isn't it? For example, if you have a non-unity coefficient for s to the power n, in that particular case, if you want to convert your denominator polynomial into a monic polynomial, you will divide numerator and denominator by the coefficient of this term, isn't it? Yes, sir. Okay. So what is a monic polynomial? Let me give you a proper definition. A monic polynomial is one. A monic polynomial is a polynomial whose leading coefficient is unity. What is the leading coefficient? Leading coefficient is the coefficient of Numerator. the highest degree term. The coefficient of the highest degree term in the polynomial. Normally जो polynomials को standard form में लिखते हैं, so we write them in such a way that the degrees are in the decreasing order. So that's why the first term will naturally be the highest degree term, and that's why we call it a leading coefficient. That is the first coefficient. Do you get me? Yes, sir. So a monic polynomial is one in which the coefficient of the highest degree term is unity. So when you have been given a transfer function and we have to obtain its state variable representation, so first we will just convert the denominator polynomial into a monic polynomial. We are considering a general case where the numerator polynomial and the denominator polynomial have the same degree. That means the degree of numerator is n and the degree of denominator is also n. In case if you have a transfer function wherein the degree of numerator is, and in most of the cases you will find such a problem wherein the degree of numerator polynomial is less than the degree of denominator polynomial. Naturally, those coefficients will be missing. For example, if the numerator polynomial has degree less than the denominator polynomial, मान लीजिए एक डिग्री कम है तो उस केस में बीटा नॉट 0 होगा. अगर 2 कम है तो बीटा 1 भी 0 होगा. Isn't it? Are you getting me? Yes, sir. Please interrupt me in case you find some difficulty in understanding. So now we will take this transfer function and obtain its 3 canonical realizations that we have talked about. So we basically will be first of all talking about first companion form realization. First companion form realization. आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दी गई है जिसको आपको रियलाइज करना है फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म में. फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म क्या होता है, पहले हम इसकी रियलाइजेशन ऑब्टेन करेंगे और बाद में आपको बताऊंगा कि इसको फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म क्यों कहते हैं और इसकी स्पेशल चीजें, इसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. Do you get me? Yes, so sir. we'll be talking about first companion form realization of a transfer function. So you have been given a transfer function gs, which is like this. You have got gs equal to beta naught s to the power n plus beta 1 s to the power n minus 1 plus so on. So on beta n minus 1 s plus beta n upon Sn plus alpha 1 s to the power n minus 1 plus so on alpha n minus 1 s plus alpha n. ये आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है.
जिसको आपको रियलाइज करना है थ्रू first companion form realization. This is your transfer function G. This is the input US and this is the output Y. ठीक है? The first companion form में realize करने के लिए please follow these steps. This is what you have to do. So you have got this US. I represent this block as the product of two blocks like this. This is US here. So I write down beta naught s to the power n plus beta 1 like that. Just wait. I'll write it like this. So you've got US. I write it like this. 1 upon s to the power n plus alpha 1 s to the power n minus 1 plus so on. Alpha n minus 1 s plus alpha n. And then I write beta naught s to the power n plus beta 1 s to the power n minus 1 plus so on. Beta n minus 1 s plus beta n. And this is your ys. Is that okay? Yes, sir. Okay. ये जो intermediate signal यहाँ पे बनी, I call it ZS. So do you have any issue with this? No, sir. Or I can write ZS upon US equal to 1 upon s to the power n plus alpha 1 s to the power n minus 1 plus so on alpha n minus 1 s plus alpha n. Can I write it like this? So yeah. Yes, sir. And if I do the cross multiplication, I can write it like this. S n z s plus alpha 1 s to the power n minus 1 z s plus so on alpha n minus 1 s z s plus alpha n z s equal to us. Okay. So yeah. Now, if this is a model that is in S domain. If I convert it equivalently into a time domain model, so what will be the, how will I represent this system as? If I convert it equivalently, ये s to the power n आपने जब Laplace transform लिया होगा, तो s to the power n वाली term आपको किसका Laplace transform लेके मिली होगी? Differential operator, nth differential operator का Laplace transform लेके आपका s to the power n वाला term मिला होगा. So if I obtain the equivalent model in time domain, so equivalently in time domain, we can write instead of this s to the power n zs, I can write d to the power n zt, where this d is equal to d by dt, and d to the power n is dn upon dtn. Is that clear? Similarly, you have the second term, ये वाली term, alpha 1 s to the power n minus 1 zs. How do you write it? Yes, just help me. We'll write it as alpha 1 d to the power n minus 1 zt. Is that clear? Yes, sir. Plus so on alpha n minus 1
dzt, सही है ना, प्लस अल्फा एन zt इज इक्वल टू ut. अगर आप इसका Laplace transform लो, you will get back to that equation. If you take the Laplace transform of this, assuming initial conditions to be 0, you will get, instead of, you will have to just replace this d operator by s operator, and this small z has to become capital Z and t has to become s. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now let me proceed. Now we can write it as, I'm doing some mathematical jugglery. So this is d n zt is equal to, I can write it as minus alpha 1 d to the power n minus 1 zt. एक और टर्म भी मैं लिख लेता हूं जो कि यहां पे लिखी नहीं मैंने, माइनस अल्फा 2 d to the power n minus 2 zt. ये वाली टर्म होगी ना नेक्स्ट, minus so on minus alpha n minus 1 dzt, then minus alpha n zt plus ut. सही है? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I will try to realize this equation through something which is known as a state diagram. State diagram basically is the diagrammatical representation for this equation. So I will show you how to draw a state diagram. State diagram के जो basic components होते हैं, जो basic building block उसका होता है, that's an integrator. So as you can see here, we have differential terms up to n. I will try to simulate it by means of n integrators. I'll show you how. I'll draw a chain of n integrators. This is one integrator. This is another one. And so on. I make a chain of n integrators. And the output of the last integrator, this one, I call it zt. If the output of the last integrator is zt, what has to be the input to it in order to make it zt? It must be dzt. Isn't it? ये डिफरेंशिएशन है ना zt की, जब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, what will I get? Yes. Sir, zt. zt. Similarly, what should be the input of this integrator? Second derivative, sir. Square zt. सही है ना? इसी तरह मेरे पास n integrators हैं. I have got n integrators like this. So if this input is d to the power n zt, what will be this? एक इंटीग्रेशन के बाद एक डिफरेंशिएशन टर्म खत्म हो जाएगी. So this will be d to the power n minus 1 zt. Are you following me? And this will be d to the power n minus 2 zt. Is that okay? I am trying to get what is known as a state diagram corresponding to this equation. And what is the procedure for obtaining a state diagram? When we want the realization in first companion form, I make a chain of n integrators in series. I am making a chain of n integrators, and the output of the last integrator, I am calling it zt, and accordingly I am naming the inputs of the other integrators. Like if this is zt, this has to be dzt, because when you integrate dzt, so this is an integrator actually. Simple mathematical integrator. Is that clear? Yes. No, Yes, sir. sir. Please आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा सर.
फिर से बताओ। Yes, sir, please. ओके, तो मैंने एक्चुअली ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये जो मैंने इक्वेशन ऑब्टेन की, इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, क्योंकि मुझे फाइनली इसका स्टेट वेरिएबल मॉडल ऑब्टेन करना है। तो उसका प्रोसीजर ये है कि आप इस सिस्टम को सिमुलेट करते हो और या डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हो थ्रू अ चेन ऑफ n integrators, and in this particular case, since you want your realization in first companion form, the procedure is that you have to have this chain of n integrators in series. The output of the last integrator, we call it as zt, that means this zt, we are calling it zt, and accordingly we are naming the inputs to the integrators. So if this is zt, naturally in order to get zt at its output, the input must be d by dt of zt, because when we integrate d by dt of zt, we get zt. Similarly, when we integrate d square zt upon dt square once, we get dzt upon dt. Similarly, we move up to the n integrators. This is a chain of n integrators. The chain of the first integrator in the series, the input to it is dn zt, so that its output is dn minus 1 zt, because dn zt you are integrating once. So one differential term will go, so you'll get dn minus 1 zt. Similarly, when you integrate it again, you'll get dn minus 2 zt. इसी तरीके से बीच में बहुत सारे इंटीग्रेटर्स हैं, टोटली n इंटीग्रेटर्स की सीरीज बनती है। Is that clear? Yes, sir, समझ गया sir. ओके, मुझे बेसिकली ये इक्वेशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो मेरा जो dnzt है, दैट इज द एडिशन ऑफ दीज टर्म्स प्लस ut, isn't it? Do you understand? तो मुझे बेसिकली मैं यहां पे एक समिंग ब्लॉक बनाऊंगा, यहां से ut लिखेंगे, तो dnzt इज इक्वल टू बेसिकली ut वाली टर्म है ना इसमें, that has come here, so this plus. Is that clear? Yes, sir. और इसके अलावा क्या क्या है, zt का प्रोडक्ट किसके साथ है, अल्फा n के साथ. So I take this zt signal and have a block alpha n here. So what will I get here? Alpha n zt, isn't it? zt वाली टर्म के कोफिशिएंट अल्फा n है ना, although minus alpha n, I could have shown minus alpha n here, but I'll show that minus at one place only. So I will have this particular signal will become alpha n zt. तो ये वाली टर्म आ गई। दूसरी टर्म मुझे इसके साथ ऐड कौन सी करनी है, alpha n minus 1 dzt. dzt ये है, so I will add one more block here whose transfer function is alpha n minus 1. Do you get me? And this is to be added to this. माइनस अभी टर्म आई नहीं, माइनस टर्म एक साथ लिखेंगे। दूसरे लफ्जों में मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे ये माइनस कॉमन निकाल रहा हूं। आई एम राइटिंग लाइक दिस, माइनस अल्फा 1 dn minus 1 zt plus alpha 2 dn minus 2 zt plus so on plus alpha n minus 1 dzt plus alpha n zt, this bracket close like this, और ut अलग से लिखते हैं। Do you understand what I'm trying to say? So you have got alpha n zt plus alpha n minus 1 dzt, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसके साथ कौन सा टर्म होगा, alpha n minus 2, इसके साथ alpha n minus 2 होगा, और ये भी ऐड हो जाएगा इसके साथ, like this. This is plus and this is plus. ये टर्म दिखाई नहीं है यहाँ पे, लेकिन बीच में जो डॉट्स हैं ये वाली टर्म्स भी होंगी. Then it will go like this. There are many terms in between. Then you have got with dn minus 2 zt you have alpha 2. So you put alpha 2 here. Is that clear? There will be a summing block. It will be like this. This will be plus and this will be plus. और dn minus 1 zt के साथ alpha 1 है. So this is alpha 1. It also goes to a summing block. It comes like this. This is plus and this is plus. All these terms are to be added to ut through minus sign. यहाँ पे minus दिखाएंगे जो मैंने कॉमन निकाला था. So basically your dn zt is equal to alpha 1 dn minus 1 zt. That is alpha 1 dn minus 1 zt
added to alpha 2 dn minus 2 zt and added to alpha n minus 1 2 d square zt, alpha n zt, sorry alpha n minus 1 d zt plus alpha n zt, इन सबको ऐड किया, फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई किया और फिर ut के साथ प्लस किया. इज दैट क्लियर? Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? This is the diagrammatical representation of this equation. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now, this is actually known as state diagram, or we call it an analog computer simulation corresponding to this given equation. Why do we call it analog computer simulation? Because you know integrators you can simulate through an op-amp circuit, isn't it? इंटीग्रेटर्स जो यहाँ पे n इंटीग्रेटर्स है, हर एक इंटीग्रेटर को आप एक ऑप-एम्प सर्किट से सिमुलेट कर सकते हो. ये गेन ब्लॉक है, गेन ब्लॉक को भी आप ऑप-एम्प सर्किट से बना सकते हो. ये समिंग ब्लॉक है, समिंग ब्लॉक को भी आप ऑप-एम्प सर्किट से बना सकते हो. और ये भी एक समिंग ब्लॉक है जिसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल ऐड हो रही है, इसको भी आप ऑप-एम्प सर्किट से बना सकते हो. तो बेसिकली ये पूरा सर्किट जाके आप लैब में यू कैन मेक इट फिजिकली थ्रू अ बेसिक कंपोनेंट दैट इज that is an op-amp, and by different combinations of resistors and capacitors. कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन चाहिए होगी आपको इंटीग्रेटेड ब्लॉक बनाने के लिए, गेन ब्लॉक बनाने के लिए आपको रेजिस्टेंसेस चाहिए होंगी, और आपको इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग मोड में अगर आपको चाहिए आपका ये जो आपका समिंग ब्लॉक बनाना हो, तो उस केस में भी आपको ऑप-एम्प सर्किट से बन सकता है. तो ये पूरा सर्किट जो है, ये पूरा जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाई यहाँ पे, इसको आप रियल वर्ल्ड में सिमुलेट कर सकते हो by means of an analog computer simulation. That means by means of an op-amp. That's why we call it an analog computer simulation, because we are basically using analog circuits not to realize it in the lab. Is that clear? This diagram is known as I told you, state diagram. State diagram, state, अभी हम इस पे state variables भी define करेंगे. And this is also known as the analog computer simulation corresponding to the given system of equation. But mind it, अभी मैंने सिस्टम आधा ही लिया, अभी हमने जो ट्रांसफर फंक्शन दी थी उसका एक ही हिस्सा लिया हमने, isn't it? मेरा जो गिवन ट्रांसफर फंक्शन था वो बेसिकली ये है ना, मैंने इस ट्रांसफर फंक्शन के दो ब्लॉक्स लिए, देन आई कॉल दिस इंटरमीडिएट सिग्नल एज ZS, और ये जो मैंने सिमुलेशन डायग्राम ऑब्टेन की वो मैंने इस हिस्से की ऑब्टेन की. Isn't it? अभी इसमें आउटपुट वाला टर्म आया ही नहीं, तो मींस अभी ये स्टेट डायग्राम इनकम्प्लीट है. Is that clear? Yes, sir. State diagram is still incomplete. Now I want to complete it. So how do I complete it? See, I'll take the other, जो बाकी हिस्सा बचा था अभी. So जो बाकी हिस्सा बचा था, that is ys equal to beta naught s to the power n plus beta 1 s to the power n minus 1 plus beta 2 s to the power n minus 2 plus so on beta n minus 1 s plus beta n into zs. वही है ना? If I go back to this, see, your ys is equal to beta naught s to the power n beta 1 s to the power n minus 1 plus so on beta n minus 1 s plus beta n into zs. यही है ना? तो इस इक्वेशन को भी हम टाइम डोमेन में लिखेंगे. So if I writing this equation in time domain, what will I get? I'll get yt is equal to beta naught dnzt plus beta 1 dn minus 1 zt plus beta 2 dn minus 2 zt plus so on beta n minus 1 z dzt plus beta nz. Are you following me? ये आपका लैपलास डोमेन वाला इक्वेशन जो था ys is equal to beta naught s to the power n zs, पहली टर्म, इसको मैंने टाइम डोमेन में लिखा.
So what will I write? Beta naught d to the power n zt, beta 1 d to the power n minus 1 zt plus beta 2 d to the power n minus 2 zt plus so on, beta n minus 1 d zt plus beta n zt. अब ये वाली इक्वेशन भी मैं इस फिगर में डाल दूंगा. इसमें देखो इस फिगर में क्या है? I have got yt equal to beta naught d to the power n zt plus there are many terms which are to be added. zt के साथ कौन सी वाली टर्म है? बीटा n. और zt यहां पे कहां है? zt is here. Are you following me? Yes, Yes, sir. I want Yes, sir. response from you. You're following me? Yes. That's good. So I have to get this yt from this. ये जो मैंने इक्वेशन लिखी इससे मुझे yt चाहिए. तो yt हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? Just see. yt में बहुत सारी टर्म्स हैं. पहली वाली टर्म है बीटा नॉट डी टू द पावर एन जेड टी. डी टू द पावर एन जेड टी यहां पर है, isn't it? So beta naught d to the power n zt is here. So I'll multiply it by beta naught. I'll multiply this term. This is d to the power n zt. I'll multiply this term by beta naught. So what will I get here? Here I'll get beta naught d to the power n zt. सही है? Next term क्या है? Beta 1 d to the power n minus 1 zt. d to the power n minus 1 zt यहां पर है. इसके साथ beta 1 मल्टीप्लाई करना है. I have to multiply beta 1 with this, and I have to add them up. So there has to be a summing block here. So I have a summing block here, and I add them up. This is plus and this is plus. Are you getting me? d to the power n minus 2 zt पे beta 2 है. So I'll multiply this by beta 2 and then add with this. सही है? इसके बाद नेक्स्ट वाली टर्म आगे डॉट्स जाते हैं आगे. So it's like this basically. So there are many. So it will be output. यहाँ पे बहुत सारे इंटीग्रेटर्स हैं. बहुत सारी बीच में ये ब्लॉक्स आ जाएंगे, बहुत सारे समिंग ब्लॉक्स आ जाएंगे. फिर डी स्क्वायर जेड के साथ क्या है? बीटा 2. डी स्क्वायर जेड 2 के साथ बीटा 2 है. So here we have beta. No, what's there? Just wait. Did I do something wrong? So यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बीटा 2 d to the power n minus 2 zt, then beta n minus 1 dzt. इसके बाद इससे पहले वाली टर्म जो होगी that will be beta n minus 2 d square zt. So this will be beta n minus 2. That will be d square zt, and it will be a summing block here. So it will be like this. This will be plus and this will be plus. d square dzt के साथ beta n minus 1 है. So this is beta n minus 1. So it will be added to this. This will be plus and this will be plus. And zt के साथ क्या है? zt के साथ beta n है. It's like this. Beta n is to be added to this. This is plus and this is plus. And when you add all these terms, what do you get? You get yt. Is that clear? Yes. Yes, sir. Are you just looking at it? आप कर भी रहे हो कि नहीं? It's better that you do it on your notebooks also. Then only you'll be able to understand it properly. Is that clear? So this is the complete state diagram for the system now, for the given transfer function. और जो ब्लॉक्स इसमें हमने ऐड किए वो सारे ब्लॉक्स भी आप ऑप एम्प सर्किट्स के थ्रू ही ऑब्टेन कर सकते हो. इसमें गेन ब्लॉक्स बड़े कुछ, समिंग ब्लॉक्स बड़े कुछ, और ये आपका इनपुट ut है और यहाँ पे आपका आउटपुट yt है. This is your output yt, and this is that intermediate variable that we have defined, that is zt. Is that clear? बेसिकली आपको अपनी प्रॉब्लम याद है ना, हम करना क्या चाह रहे थे? हमारा ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था, हम उसका स्टेट मॉडल ऑब्टेन करना चाहते हैं फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म में. तो ये आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू गेट द स्टेट मॉडल इन फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म. अभी भी हमें स्टेट मॉडल मिला नहीं. नाउ आई विल टेल यू हाउ विल यू गेट द स्टेट मॉडल कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस सिस्टम.
Is that clear? स्टेट मॉडल ऑब्टेन करने के लिए, टू गेट द स्टेट मॉडल इन फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म, या इन जनरल स्टेट मॉडल ऑब्टेन करने के लिए आपको बेसिक रूल याद रखना है that the outputs of the integrators are to be taken as state variables. Outputs of the integrators are to be taken as state variables. इसमें कितने इंटीग्रेटर्स हैं? How many integrators are in this state diagram? N, sir, N. N integrators. So how many state variables will be there? N. N state variables. Because the general rule that we have taken is that outputs of the integrators are to be taken as state variables. Because these are basically the dynamic elements in your state diagram. ये वाले जो gain blocks हैं, summing blocks हैं, ये तो सारे passive elements हैं. आपका जो main active element इसमें है वो, या जो आपका main dynamic element है, that's the integrator. So outputs of the integrators are to be taken as state variables. This is the general rule for getting the state variable model from the given simulation diagram or from the given state diagram. Now, in order to get the state model in first convenient form, how do you have to name the state variables? Now, one thing we know that the outputs of the integrators are to be chosen as the state variables. Second thing that you have to remember is, in order to get the state model in standard first companion form, the state variables are to be named from right towards left. That means ये वाला पहला state variable मानना है आपको, इसका नाम x1 होगा, इस state variable का नाम x1 होगा, इसके बाद ये वाला इंटीग्रेटर, लास्ट वाला इंटीग्रेटर का आउटपुट है, ये चेन में लास्ट वाला इंटीग्रेटर जो है. अगर आपको फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म में आपका मॉडल चाहिए तो आपको स्टेट वेरिएबल्स ऐसे नेम करने हैं that you have to name the state variables so that you will get the model in first companion form, and for that you have to name the state variables from right towards left. That means the last integrator का आउटपुट जो है उसका आप x1 बोलोगे, इससे पहले वाला जो इंटीग्रेटर है, ये वाला इंटीग्रेटर, इसका आउटपुट x2 होगा. Is that clear? ये इस चेन में इससे पहले वाला इंटीग्रेटर का आउटपुट होगा, this will be x3. Is that clear? और यहां पे ये वाला इंटीग्रेटर का आउटपुट आपका लास्ट स्टेट वेरिएबल होगा. सो दिस विल बी एक्चुअली xn and this will be xn minus 1. Do you get me? In order to get the state model in first companion form, to get the state model in first companion form, name the state variables as x1, x2, so on up to xn from leftmost integrator towards the right, and move towards the right. Now left to right, from rightmost integrator, sorry. And move towards left. राइटमोस्ट इंटीग्रेटर के आउटपुट का आप x1 बोलोगे और इसी तरीके से स्टेट वेरिएबल्स को नाम देते जाओगे by moving towards right, from right towards left. Is that clear? कुछ तो बोलो यार. Yes, sir. Okay. Now let's write down the state equations. अब हमने state equations लिखनी है. आपका ये जो x2, x1 है, ये अगर x1 है तो इसके इनपुट पे क्या होना चाहिए?
अगर किसी इंटीग्रेटर का आउटपुट x1 है, x1 dot. x1 डॉट होना चाहिए, तो आपकी पहली इक्वेशन जो बन जाएगी दैट विल बी x1 डॉट इक्वल टू x2. इज दैट क्लियर? Yes, sir. क्योंकि इसका नाम हमने x2 रखा है ना. So now the state equations can be written as state equations can be written as x1, पहली इक्वेशन बनेगी x1 डॉट इक्वल टू x2. इसी तरीके से चलता जाएगा x2 डॉट इक्वल टू x3. देखो आप यहां पे this is your x2 and this is x1 dot also. This is x2 dot, because if this is x2, इसके इनपुट पे x2 dot होना चाहिए ना. So your x2 dot is equal to x3. Is that clear? And if this is xn minus 1 dot, what should be the input of this integrator? If this is xn minus 1, this should be xn minus 1 dot. So xn minus 1 dot is equal to xn. xn minus 1 dot. So ऐसे ही आप चलते जा रहे हो. So you have got xn minus 1 dot equal to xn. अब लास्ट वाली इक्वेशन पे पहुंचेंगे हम. That is xn dot. xn dot वाला इक्वेशन कौन सा हुआ? ये आपका xn है, ये xn डॉट है, ये वाली टर्म. सही है ना? Yes, sir. What is your xn dot equal to? Just see. Your xn dot is equal to, एक तो इसमें ut वाली टर्म है और ये सारी टर्म्स ऐड होके आ रही हैं, बीच में माइनस साइन भी है. So your xn dot is basically equal to, just see, xn dot is minus alpha 1 xn minus alpha 2 x, क्योंकि माइनस भी है ना यहाँ पर, minus alpha 2 xn minus 1 minus alpha 2 minus so on minus alpha n minus 2 x3 minus alpha n minus 1 x2 and minus alpha n x1 plus ut. So I'll write down the equation for xn dot like this. Xn dot will be like this: minus alpha n x1 minus alpha 1 minus alpha n x1 minus alpha n minus 1 x2 minus so on minus alpha one. Let's see what's there. Minus alpha 2 xn minus 1 minus alpha 1 xn minus alpha 2 xn minus 1 minus alpha 2 xn minus 1 minus alpha 1 xn और प्लस ut भी है. ये ठीक है? This I have just written from your equation. जो अभी मैंने इक्वेशन बनाई उसी से मैं लिख रहा हूं. ये आपका ये xn डॉट यहां पर है. Let me get it in one frame only. This is your xn dot here. Is everybody clear about this? Because this is your xn, so the input to this integrator must be xn dot. And what is the xn dot equal to? xn dot में एक तो ut वाली टर्म आती है और ये सारी टर्म्स ऐड होके आती हैं. ये तो इससे बाहर जा रहा है तो ये इसमें कंसीडर नहीं होगा. These are the inputs to this term. Is that clear? So your Yes, sir. Your xn dot is equal to, so it's equal to minus alpha 1 xn minus alpha n minus 1 x. Minus alpha 2 xn minus 1 minus so on minus alpha n minus 2 x3 minus alpha n minus 1 x2 minus alpha n xn plus ut. That's what I have written there. वही लिखा मैंने वहां. So ये मेरी आ गई कितनी state equations? N state equations. Now if I write it in matrix form as we write in case of a state model, what the matrix look like? Matrix will be like this: x1 dot
x2 dot so on xn minus 1 dot or xn dot is equal to, ये मैं मैट्रिक्स एक बना के रखूंगा यहाँ पर. Then I have here x1 x2 so on xn minus 1 xn. पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं. तो you have got what is x1 dot equal to? x1 dot is x2. So it will be 0 here and only 1 here and the rest zeros. Isn't it? What is x2 dot equal to? x2 dot is x3. x3 यहाँ पे होगा. So x2 dot is x3. 0, 0, 1. Then so on. 0, 0. And so on. What will be xn minus 1 dot? xn minus 1 dot is equal to xn. So this is all zeros except the last one. Isn't it? And what is xn dot equal to? That is minus alpha n x1 minus alpha n minus 1 x2 minus so on. ऐसे. और यहाँ पे क्या क्या है? लास्ट वाली दो टर्म्स है. एक तो है माइनस अल्फा 2 और माइनस अल्फा 1 और साथ में क्या है? प्लस यूटी भी है. यू वाली टर्म भी है लास्ट वाली एक्सप्रेशन में. सो दिस इज 0 0 0 so on 0 and 1 and you have got u जिसको आप यूपी बोल रहे हैं यहाँ पर. इनपुट वाला टर्म है. इज दैट क्लियर? यस. जो मैंने इक्वेशंस लिखी इन एन स्टेट इक्वेशंस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बनाया यहाँ पे स्टेट मॉडल बाय राइटिंग दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म. सो यू कैन सी हियर x1 dot is equal to x2. So x1 dot is equal to 0 into x1 is 0 plus 1 into x2. So खाली इस पोजीशन पे सेकंड वाली पोजीशन पे 1 आएगा, बाकी सारी जीरोस आएंगे पहले रो में. Isn't it? x2 dot is x3. तो x2 dot में तीसरी पोजीशन पे 1 आएगा. 0 into x1 is 0, 0 into x2 is 0 plus 1 into x3 is x3. Rest of the terms are all 0. Same way ये जो 1 है ये आगे चलता जाएगा. नेक्स्ट वाली इक्वेशन अगर मैं x3 की इक्वेशन भी लिखता है, x3 dot की equation that will be equal to x4. So you'll have 0, 0, 0 and 1 here and all other terms 0. और लास्ट में जब मैं पहुंचा xn minus 1 dot पे, that is equal to xn. So xn minus 1 dot is equal to xn. xn यहाँ पर है. तो इसमें जो लास्ट वाली टर्म है खाली 1 होगी, rest of the terms will be 0. And my last equation is actually xn dot is equal to minus alpha n x1. So xn dot equal to minus alpha n x1 minus alpha n minus 1 x2 minus so on. This is minus alpha 2 xn minus 1 minus alpha 1 xn और इसमें ut भी है, तो plus 1 into u. Is that clear? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. तो ये आपका स्टेट मॉडल बना है. खाली अभी स्टेट इक्वेशन ही कंप्लीट है. अभी हमने आउटपुट इक्वेशन नहीं लिखी. Isn't it? तो ये वाला मैट्रिक्स जो है, ये जो मैट्रिक्स A इसमें है, बिकॉज दिस इज योर x डॉट इक्वल टू ax प्लस bu. इसमें A का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्पेशल है और मैट्रिक्स लिटरेचर में इसको फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म मैट्रिक्स कहते हैं. ये वाला मैट्रिक्स जो इस फॉर्म में हो इसको फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म मैट्रिक्स कहते हैं मैट्रिक्स लिटरेचर में. इसमें स्पेशलिटी क्या है? ये भी स्पार्स मैट्रिक्स ही है. इसमें आप देखो पहले n-1 रोज में there are all entries 0 except the super diagonal which has got 1. It has got 1 along the super diagonal. What is the super diagonal? It's a diagonal above the main diagonal. Main diagonal इसका ये है ना? Isn't it? Yes, sir. का मेन डायगोनल ये है. इसके ऊपर वाला जो डायगोनल है इसको सुपर डायगोनल कहते हैं. तो ये इसमें along the super diagonal you'll have 1 because this 1 is actually moving like this. In the next case इसमें अगर आप next row भी लिखो इसमें 1 यहाँ पे होगा, फिर आगे जाएगा ऐसे. तो इसमें सुपर डायगोनल पे 1 है पहले n-1 रोज में और बाकी सारी एंट्री 0 है
and there are entries only in the non-zero entries only in the last row. और अगर आप देखो इसमें ये जो लास्ट रो में नॉन जीरो एंट्रीज हैं, ये आपके डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं. जो आपका डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल था ना, जो हमने कंसीडर किया था स्टार्ट में, ये उसी के कोफिशिएंट्स हैं विद द नेगेटिव साइन एंड रिटन इन रिवर्स ऑर्डर. जैसे मेरा जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल बेसिकली था, वो मैंने क्या लिखा था, Sn प्लस alpha 1 s to the power n minus 1 plus alpha 2 s to the power n minus 2 plus so on alpha n minus 1 s plus alpha n. This was my denominator polynomial, isn't it? जो मैंने ट्रांसफर फंक्शन ली थी, उसका डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हमने यही लिया था ना. Yes, sir. तो ये इसी की कोफिशिएंट्स आके बैठ गए इस लास्ट रो में. लेकिन इसमें जो कोफिशिएंट्स थे वो पॉजिटिव थे, इसमें नेगेटिव साइन लेके आ गए, वो रिवर्स ऑर्डर में आ गए. इसमें अल्फा 1 पहले था, इसमें अल्फा 1 लास्ट में आ रहा है. Isn't it? Yes, sir. तो इस मैट्रिक्स की स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जो पहले n-1 रोज हैं, they have got all the entries 0 except the entries in the super diagonal which are all ones, and there are non-zero entries in the last row only. Is that clear? Yes, sir. And regarding the B वाला जो मैट्रिक्स है या B वाला जो वेक्टर है, ये भी स्पेशल है. It has got all entries 0 except the last one which is equal to 1. So this type of matrix representation in matrix literature is known as first companion form matrix. So that's why this realization is known as first companion form realization. मैथमेटिकली भी इसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं और इससे कंट्रोल के रिलेटेड भी बहुत सी स्पेशल प्रॉपर्टीज डिराइव की जा सकती हैं, जो हम आगे देखेंगे. जो मैंने इसका दूसरा नाम आपको बताया था, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म. दिस इज नोन एज फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म और कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म. फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म नाम इसका आया है बिकॉज ऑफ द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स ए, और कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म इसका जो नाम आया दैट्स बिकॉज ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टीज of related to control system literature that is embedded in this matrix. वो हम आगे देखेंगे इसमें क्या. फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि अगर आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दी हुई है, उसको फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म में कैसे रियलाइज किया जाता है. Is that clear? Yes, sir. Is that clear or not? Yes, sir. Now this is still incomplete. So what do I have to add to it? अभी इसमें आउटपुट इक्वेशन नहीं ना आई. No. अभी इसमें आउटपुट इक्वेशन आई ही नहीं. Let me see if I missed something in this. Okay, now we will try to add this output equation in this. Now let me go to the output equation. Output equation मैंने यहाँ से obtain किया. This is your yt and this is where from I have obtained this. Yt is equal to this, isn't it? इसमें ये जो dnzt है, dnzt xn डॉट है. सही है ना? आप देखो यहाँ पे जो मेरी आउटपुट इक्वेशन है, आउटपुट इक्वेशन मेरा ये है. इफ आई टेक द आउटपुट इक्वेशन यहीं से लेके अगर मैं इसका ऑब्टेन करूं, दिस स्टेट द इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आउटपुट. सो हियर व्हाट वी हैव गॉट इज दिस इज इक्वल टू बीटा n minus 1. This is beta n minus 1. This is b n minus, no, this is what was it here? This is dzt, beta n minus 1 dzt. Now I can write this as yt is equal to beta naught. What is dnzt? dnzt is xn dot. सही है ना? So this is xn Yes, sir. dot. xn dot plus beta 1. What is dn minus 1 zt? That is x N minus 1. no dn minus 1 z t. dn minus 1 z t जो है, dn minus 1 z t xn है.
सही है ना? dn minus 1 Yes, sir. z Yes, is sir. Yes, sir. Yes. So instead of this I can write xn plus beta 2. This will be xn minus 1 plus so on beta n minus 1. This one will be x2 plus this is beta n x1. Are you following me? Yes. Or I can write it as yt is equal to beta naught xn dot का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा जो मैंने अभी स्टेट इक्वेशन ऑब्टेन की xn डॉट की ये वाली इक्वेशन है ना मेरी, this one, this equation. I will substitute xn dot with this. So xn dot, instead of xn dot, I will write down minus alpha n x1. So instead of xn dot, I will write minus alpha n x1 minus alpha n minus 1 x2 minus so on minus alpha 2xn minus 1 alpha 2xn minus 1 minus alpha 1xn plus u. ये वाली इक्वेशन सिंपली मैंने xn डॉट की सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जगह आ गया. देन उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरी अपनी वाली टर्म्स है यहाँ की, दैट इज बीटा 1 xn प्लस बीटा 2 xn minus 1 plus so on beta n minus 1 x2 plus beta n x1. Are you following me? Yes. So yeah. Yes, sir. So you are following the steps. Now let's try to combine. इसमें ये जो yt में जो x1 वाली टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इनको कंबाइन करेंगे. So I can write x1 अगर मैं बाहर लूँ, so x1 के कोफिशिएंट में क्या क्या आ जाएगा, बीटा n माइनस अल्फा n बीटा नॉट, isn't it? So yt वाली जो टर्म बनेगी, that will be y will be equal to बीटा n माइनस alpha n beta naught into x1. So yeah, plus Yes, sir. plus beta n minus 1 minus alpha n minus 1 beta naught into x2. आप देखो x2 वाली टर्म्स क्या क्या है, x2 में एक तो बीटा n माइनस 1 है माइनस अल्फा n माइनस 1 बीटा नॉट. सही है? प्लस सो ऑन. अब देखते हैं xn माइनस वाली टर्म, xn माइनस 1 वाली टर्म में x2 है, तो दिस इज बीटा. So we are seeing which particular term? We are seeing x2. So you have got x1, x2. अब हम xn माइनस 1 वाली टर्म देख रहे हैं. xn माइनस 1 वाली टर्म में एक तो Sir, beta 2 minus alpha 2 beta naught. है ना, बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा नॉट, ये xn माइनस 1 में आएगा. सही है? और xn में क्या आएगा? ये हेल्प मी. Sir, beta 1 minus beta naught alpha 1. वेरी गुड. प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा 1 बीटा नॉट, है ना, इंटू x1. और u वाली टर्म के साथ क्या है, बीटा नॉट प्लस बीटा नॉट u. सही है? ठीक है ना? ये ना यहाँ पे बीटा नॉट u भी है ना अलग से. अब हम इसके आउटपुट की इक्वेशन लिखेंगे. नाउ वी विल राइट डाउन द आउटपुट इक्वेशन. सो व्हाट इज द आउटपुट इक्वेशन लाइक? The output equation will be like this. Just see. This is here x1 ही है, यहाँ पे xn है ना.
So your yt is equal to what? Tell me. Or we'll simply write y in keeping the standard nomenclature for this thing into mind. So beta y is equal to what? x1 के साथ कौन सी टर्म है? बीटा n minus alpha n beta naught. Beta n minus alpha n beta naught. x2 वाली टर्म के साथ क्या है? बीटा n minus 1 minus alpha n minus 1 beta naught. So on. Then you have got beta 2 minus alpha 2 beta naught. And then you have got beta 1 minus alpha 1 beta naught. और यहाँ पे ये मैट्रिक्स है एक्चुअली. This is your y matrix. So it's like this. Then here x1, x2, so on, xn minus 1, xn. सही है ना? और क्या है? प्लस u वाली टर्म भी है ना? u वाली टर्म में क्या क्या है? सर 0 0 0 और लास्ट पे बीटा. नहीं, 0 0 नहीं. It's simply plus beta naught into u. बेसिकली y जो है ना, ये सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है ना, y का साइज क्या है? 1 क्रॉस 1 है ना, और इसका साइज क्या है? इसका साइज है 1 क्रॉस n. सही है? इसका साइज क्या है? दिस इज n क्रॉस 1. u is also 1 cross 1. So this is also 1 cross 1. So it's not like just 0 0 0 0 beta naught. It's a single entry. Do you get me? Is that clear? Yes. Yes sir. Yes, sir. So this is your y. ये आपकी आउटपुट इक्वेशन बनी. और इसमें देखो ये d वाली टर्म भी आई. आपका जो हम जो स्टेट मॉडल लेते हैं x डॉट इक्वल टू ax प्लस bu, y इक्वल टू cx प्लस du. इसमें ये आपका दिस इज योर c and this is your d. Okay. And if I go back to the state variable model जो अभी हमने बनाया है यहाँ पे, ये बीटा नॉट वाली टर्म जो है, बीटा नॉट वाली टर्म यहां से उठ के डायरेक्टली जाती है आउटपुट पे. It doesn't go through this chain of integrators. That's why it is called a feed forward term. It's the term that is directly fed from the input to the output. Are you getting me? Yes, sir. Dynamics जो है सिस्टम की वो डिफाइन होती है इन इंटीग्रेटर्स के थ्रू. ये जो बीटा 1 बीटा 2 है ये इसी के इंटीग्रेटर्स के आउटपुट से ही आते हैं. लेकिन ये जो बीटा नॉट वाली टर्म है ये डायरेक्टली इनपुट से होके इन समिंग ब्लॉक से होते हुए इट गोज टू द आउटपुट. So that's why we call it a feed forward term. So this beta naught in this particular case is the feed forward term. Do you get me? और जो हमने ट्रांसफर फंक्शन ली थी, if you go back to that, अगर आप ट्रांसफर फंक्शन पे फिर से जाओ जो हमने ली थी, जो सिस्टम की ट्रांसफर फंक्शन हमने ली थी, ट्रांसफर फंक्शन हमने कुछ ऐसा लिया था. We had taken beta naught as to the power n plus beta 1 as to the power n minus 1 plus so on, beta n minus 1 s plus beta n upon s to the power n plus alpha 1 s to the power n minus 1 plus so on, alpha n minus 1 s plus alpha n. यही लिया था ना ट्रांसफर फंक्शन. हमने एक जनरल केस कंसिडर किया था जिसमें आउटपुट, जिसमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री बराबर हो. So normally, if the numerator polynomial has degree less than the denominator polynomial, let's say 1 less, so what will be beta naught in that case? 0. 0. तो beta naught 0 होगा तो means d 0 होगा. तो आपको याद रखना है कि d वाली टर्म तभी आती है जबकि ट्रांसफर फंक्शन स्ट्रिक्टली प्रॉपर हो. That means numerator polynomial और denominator polynomial की डिग्री बराबर हो. If the for control systems normally the numerator polynomial has got degree less than the denominator polynomial. So this beta naught term will be usually missing for control system. So that's why this d term you will not find normally. तो d term आपको याद रखना है कब होगा आपके इसमें स्टेट वेरिएबल मॉडल में, तभी होगा जब आपका ट्रांसफर फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली प्रॉपर हो. दैट मींस न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री बराबर.
Is that clear? Yes, sir. Okay. Second point that I want to make is, as I have been repeatedly saying that control systems में normally D वाली term 0 होती है, that is feed forward term 0 होती है. उसका reason basically क्या है? You know, when you design control systems, you want to design control systems in such a way that they follow the desired input and they reject the disturbances, isn't it? Your control system should be designed in such a way that your control system follows the desired input, the input that you want it to follow, and it rejects any disturbances. Disturbances को ये reject करना चाहिए. That's the important property for a control system. Now, in case your D term is non-zero, that means there's a direct link from the input to the output. Due to this direct link from the input to the output, any disturbance in the input, that will appear in the output also if this D term is non-zero. Are you following me? Yes, sir. So if there is some disturbance in the input, and if there is a D term existing, in that particular case, that disturbance will get multiplied by B naught. If B naught is greater than 1, in that particular case, your disturbance will maybe actually amplified and it will appear at the output because it's directly fed to the output, whereas the rest of the terms are actually fed to the output through the chain of integrators. डायनेमिक्स जब सिस्टम की एक्ट करती है तो उसमें ये जो डिस्टर्बेंस है वो सप्रेस हो जाती है, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट टर्म लिंक कर रही हो इनपुट और आउटपुट को, उसमें उसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ जाती है आउटपुट में. दैट्स व्हाई व्हेन यू डिजाइन कंट्रोल सिस्टम्स यूजुअली डिजाइन देम इन सच अ वे दैट दे हैव गॉट प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शंस, और नॉर्मली स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शंस आपके कंट्रोल सिस्टम्स की होते हैं. इज दैट क्लियर? बिकॉज़ कंट्रोल सिस्टम्स आर बेसिकली डिजाइन्ड एज लो पास फिल्टर्स. They are basically designed so that they pass the low frequency desired range of signals and they suppress the high frequency noise. तो अगर feed forward वाली term आपके state space model में है तो उसमें high probability है कि आपके input channel में अगर कोई noise है वो output में amplify होके आ जाएगी. So that's why we usually design control systems in such a way that this D term is 0. So this was just, by the way, I just mentioned it here. But in general, if you have been given a transfer function, and if the degree of numerator polynomial is equal to the degree of denominator polynomial, you will get this D term in your state variable model. In case you have been given a transfer function wherein the numerator polynomial has degree less than the denominator polynomial, this D term will be missing. ये आप just बोल के ही बतानी चाहिए. जैसे मैंने अगर आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दी कुछ ऐसी, let's say s cube plus 3s square plus 2s plus 1 upon s4 plus 4s cube plus 3s square plus s plus 2, and I tell you that tell me once I obtain its first any state variable realization, what will be the value of D in this case? You should immediately tell me that since it is a proper transfer function, the D term will be 0 when we will obtain the state variable realization for the system. Is that clear? Yes, sir. Okay. और अगर ये वाली D वाली टर्म 0 है, मींस अगर बीटा नॉट 0 है, तो आप देखो ये भी सिंप्लीफाई हो जाता है. ये वाली टर्म भी आपकी सिंप्लीफाई हो जाती है, बीटा नॉट इज 0. So if beta naught is 0, you will simply get beta n minus 1, beta 2, and beta 1 in the C matrix, isn't it? And these are actually the coefficients of your numerator polynomial written in reverse order. जैसे मान लीजिए अगर बीटा नॉट वाली टर्म 0 है, मींस अगर न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल से कम है, एक कम है, in that particular case beta naught will be 0, isn't it? Yes, sir. So To alpha and beta this is going to 0. be 0, this is going to be 0, this is going to be 0, and this is going to be 0. And what will remain here is only beta n minus 1, beta 2, and beta 1. So that is the the degree of this coefficients of the numerator polynomial written in reverse order. That is beta n first, then beta n minus 1 up to beta 1, like this. Is that clear? Yes, sir. Clear to all? Yes, sir. तो अब मान लो ये वाली ट्रांसफर फंक्शन मैंने जैसे मैंने ये ट्रांसफर फंक्शन लिखी. अगर मुझे इसका स्टेट वेरिएबल मॉडल चाहिए फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म में, जस्ट बाय इंस्पेक्शन मुझे लिखना है, देख के लिखना है, तो बताओ मुझे इसका स्टेट वेरिएबल मॉडल क्या होगा फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म में? जस्ट देख के मुझे लिखना है. पहले आपको देखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है वो मोनिक पॉलिनोमियल होना चाहिए. वो है मोनिक पॉलिनोमियल यहाँ पे बिकॉज द लीडिंग कोएफिशिएंट इज डिग्री unity, isn't it? So how many state variables will be for this system?
That will be equal to the degree of the denominator polynomial. So there will be 4 state variables. It will be like this: x1 dot, x2 dot, x3 dot, x4 dot. That will equal to, what is the structure of A matrix in first companion form? You have got something like this: 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. And then you have got the coefficients of the denominator polynomial with negative sign written in reverse order. That means you will have -2 here, then -1 here, then -3 here, and then -4 here. That's your A matrix. Then you have got x1, x2, x3, and x4. Plus, what is B like in first companion form? All entries 0 except the last one, which is 1 into U. Is that clear? Yes, sir. और आपकी जो आउटपुट इक्वेशन होगी वो क्या होगी? आउटपुट इक्वेशन आपका कुछ ऐसा होगा: y is equal to, yes, अभी बताया ना मैंने, y is equal to Delta term, sir. beta n. That's this one first. Yes, sir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, and 1. 3, 1. Then x1, x2, x3, and x2. प्लस d वाली टर्म होगी नहीं, क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल 1 लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल. बीटा नॉट इसमें है ही नहीं, है ना? Yes, sir. तो ये आपका स्टेट वेरिएबल मॉडल आ गया फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म में. This is just by inspection we have written, but if you have to construct the state variable model for the system in first companion form, you will have to show the complete procedure. Is that clear? Step wise पूरा प्रोसीजर दिखाना है आपको कि आप इसका स्टेट वेरिएबल मॉडल कैसे डिराइव करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे. Are you getting me? यस सर, उतना लंबा लिखने के लिए आता होगा? आता होगा मतलब सर वो स्टार्टिंग से सब कुछ आता है. जो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सब कुछ आएगा आपको, और सब कुछ जल्दी जल्दी भी आएगा. Is that clear? You should follow the steps. Steps इसमें बहुत ही सिंपल है. खाली आपको याद रखना है कि स्टेट वेरिएबल्स को नाम कैसे देने हैं, कैसे बनाना है वो चेन ऑफ इंटीग्रेटर्स. You just go through this once, twice, thrice. You will just develop interest in this, and you'll feel that it's very interesting to actually have these state models derived from these transfer functions. Is that clear? यस सर. एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से मैं कह रहा हूं कि अगर जस्ट आपको इंस्पेक्शन से लिखना है तो बस आप लिख सकते हो ऐसे ही, लेकिन अगर आपको कंस्ट्रक्ट बोला है, कंस्ट्रक्ट का है करने के लिए, you have to construct the state variable model, you'll have to show all the steps as I have discussed. Is that clear? यस सर. As I told you that this type of structure in matrix literature is known as first companion form representation. That's why this is known as first companion form realization of a transfer function. अभी इसमें कैनोनिकल क्या है, स्पेशल क्या है, वो आगे पता चलेगा. अभी हम जस्ट ये सीख रहे हैं कि डिराइव कैसे करना है. Is that clear to everybody? Yes, sir. इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आप देखोगे, हम ट्यूटोरियल भी दे देंगे आपको. इसका लास्ट वाला ट्यूटोरियल आपने सबमिट कर लिया सबने? यस सर. Could you Sir. solve all the questions? यस सर. उसमें सर कुछ प्रॉब्लम था सर. उसमें सर ट्रांसफर फंक्शन निकालने में बहुत डिफिकल्टीज हो रहा था सर. किस वाले में? वो सर वो जो टू इनपुट वाला था? यस सर. यस सर. उसमें सर 2 का 4th और 3rd सर, उसमें 6 वेरिएबल था सर. उस पे ट्रांसफर फंक्शन निकालने में बहुत दिक्कत हो रहा था सर. डिफिकल्ट था. तो आपको कम से कम ये रियलाइजेशन तो हो जाएगा ना कि ऑन पेपर ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है. यस सर. Isn't it? So that's why we have computers for getting the models, and we develop computer programs for getting the models for this. But anyway, but you should know how to do it on paper also. क्योंकि जब ऑन Yes, sir. पेपर करोगे तो आपको स्टेप्स भी समझ में आ जाएंगे और पूरा क्लियर भी हो जाएगा इसका जो कॉन्सेप्ट है. ओके. ओके सर. So we are preparing the second tutorial for you. तो वो हम ट्यूटोरियल आपको दे देंगे preferably in this by the end of this week only. So in the next class we'll be taking up second canonical form realization, that is second companion form realization of the transfer function. उसमें भी हम ऐसे ही steps देखेंगे क्या है, और उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम कि फाइनली वो जो रिप्रेजेंटेशन आती है वो किस फॉर्म में आती है. ओके. यस सर. So any problem anywhere you face, you can just WhatsApp ग्रुप पे आप डाल सकते हो. कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको, या मुझे आप मेल कर सकते हो. So I will try to incorporate whatever feedback you give in my scheme of delivery of my lectures, so that you get the best out of what I am delivering. Is that clear?
Yes, sir. Okay, thank you all. We'll stop here, and we'll meet on tomorrow. कल हमारी class है ना, second class, 10 to 11. So we'll meet tomorrow again. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.